So let me start with a very shocking, very, a controversial topic. You all are fund managers. You spend so much years researching stocks, researching sectors, understanding macro dynamics and all that. Will artificial intelligence take away your job? Because I can ask, and I wish I had done this morning, that give me a portfolio of, mid caps. तो मेरे ख्याल से मेरे को दे भी देता artificial intelligence. In such a scenario, what value do you think fund managers can add? Maybe you should ask the IIT alumni to start first. You're the senior, right? Okay, I'll go first then. He happens to be from the same institute. He's 1 year junior to me. So thank you everyone, and thank you for having us here. See, it's early days, and I think this theme about artificial intelligence taking over the world is plausible, but not probable, I would say. Because however much computing power that anybody can have, right? Economics and markets are so complicated that it becomes difficult, it will be difficult for any model, however much back testing you'll do, to predict how future trends are going to work out. I mean, if any AI model could have predicted that NVIDIA is going to add $300 billion of market cap in a day, then it would have been worth it. It's added, I think, the market cap of entire Reliance Industries in one day. That's one NVIDIA stock. So the thing is that change happens gradually and then suddenly. And that's what we've seen time and again in the market. No crash in the market has been gradual. And no inflection point has been gradual. A model can predict a trend, but it may not be able to predict inflection point, whether it's in macroeconomics or markets or company fundamentals. And that's where I think the old adage of, investing is ultimately an act of wisdom. Okay. And that wisdom can come from anywhere, through experience, etc. Okay. Yeah, Rahul, what would you say to that? The only thing I'll add to what Mihir said is that there cannot be half measures. So suppose somebody is implementing a quantitative technique or a algo-driven technique. We have seen that you have to commit a lot of resources and a lot of computing power. Otherwise, you will not get the results, and it has to taken to its extreme length in terms of low latency kind of trading and so on. So my own feeling is that a hybrid model, let's say not a hybrid model, a half-baked model, which is not fully taking into account the whole velocity and the whole kind of parameters and fully exploiting it, it will not result in anything concrete. As far as artificial intelligence is concerned, I think it has a lot of usages apart from investing also. For example, my product team, to be, just to give you some information, my product team is now exploring an option to create AI generated, after Imran Khan's AI generated video, they are exploring whether they can just give a text and produce a AI generated video of mine. Which means that my job is in danger. Maybe you can have AI versions of 4 of us talking about it. But those are the use cases where I think there will be much more progress as compared to investing per se. That's my view at least. Okay. Santosh, what do you have to? So, firstly, a bit funnier here because yesterday we were discussing the same thing in our office, and we thought that actually we should not have our jobs because actually the problem is we were not buying into stocks saying that, okay, fundamentals are bad or good. AI would have done that without looking at fundamentals. They would have done that and what it. But that's the funny side of it. But yeah, my belief is other than what Mihir and see, one of the things with artificial intelligence is you have to make it learn, right? The machine learning, firstly, the machine has to learn and then it has to become intelligent. And that's where you need a constant stream of data where the behavior is like, it behaves in a pattern. Right?
problem with the stock market, one of the problems with the stock market is the behavioral aspect of human, right? There is no pattern in behavioral aspect of human. And if I sort of put that into the context, then at least for some time, till the time AI takes over entire portfolio management, I think it was going to be a difficult task for the AI to manage portfolios. So that's my belief. Maybe I'm trying to save my job. That's one other part. Okay. So you're not sure entirely if it is not wishful thinking. There may be wishful thinking. Anyway. I think, sorry, just to add to what Santosh said about the data, you know, the data that you train the AI models with are also biased, right? So the biases existing in the data will reflect in the AI model bias also. For example, today there's a huge controversy that Google, the AI, when you know, in the chat GPT or in Gemini, when you're asking it to throw up images of certain kind of people, say the founding fathers of the America, and they were all white, right? It's throwing out non-white people and consistently throwing out non-white people. So obviously there was something in the data set provided to the Gemini model, which is getting reflected. Maybe it's the bias of the programmer or the data provider, whatever it is. So those kind of biases which were there in human beings in the market, which makes the markets inefficient, will also get reflected in the AI models. Okay. So as of now, not perfect, is it? Okay, Chirag, I wanted to start with you with a different question altogether. Sure. How have you seen fund management evolve over the years? How has your job changed over the years? There's so much of data, there's so much of analysis, there's so much of noise. When I joined this mutual fund business way back in '94, at that time companies के results इतने जल्दी नहीं आते थे, quarterly तो होता भी नहीं था, meetings मिलती नहीं थी, access बहुत difficult था to management, only fund managers had it. And there was a lot of money to be made at the cost of the retail investors and non-institutional players. So how have you seen the changes and how does it impact your job? Because creating alpha is turning out to be a challenge more and more. Sure. So I think fund management has evolved significantly from where it was. We used to not have so many investment opportunities in earlier days. There are new sectors that have come, so new opportunity sets have evolved. Okay. And to be on top of it in terms of looking at where the next leg of growth can be from a macro perspective is trying to get challenging because there are so many of us looking at the same thing at the same time. And therefore, staying ahead of the curve, evolve in terms of data, is what we have done significantly more over a period of time. Plus managing, there are many managements who have come new, right? We don't know much of them in terms of history, etc. To knowing more in terms of how they behave, how they will reward minority shareholders, how they will act in different market scenarios is what we try to assess by meeting them, trying to do channel checks, etc. Which has become more and more, because earlier days there were companies which were very well established coming to the market. But now newer sectors are emerging, newer companies are coming, newer managements. So it's made our job even more extensive to that extent. And I think fund management industry as a whole is kind of putting in a lot of efforts and trying to deliver to the investors who are putting faith in the fund management industry. So I think it's evolved significantly and will continue to evolve. But I think also one thing that we had to do alongside, fund management is also try and evolve the investors along with so many partners with us, right? So educating them and telling them that what we are doing and why we are doing in the terms of thesis is also a part that we have kind of evolved over a period of time. One thing that I've noticed over the years, when Morgan Stanley came out with its Morgan Stanley fund, they came out with an IPO, it used to be called IPO then, of 300 crores. It was hugely oversubscribed. They retained the oversubscription और 1000 crore का fund हो गया था day one से. और ये record अगले 5-6 साल तक नहीं टूटा था. Okay. आज 1000 crore तो काफ़ी आम बात हो गई है. तो स्केल बहुत अलग हो गया है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फंड मैनेजमेंट जितना हैंडल करता था. इसका क्या इम्पैक्ट होता है एक इन्वेस्टर्स
के आउटकम के लिए, और हाउ डज इट इम्पैक्ट योर जॉब इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग टीम्स एंड managing all that data which is coming in, managing such a huge scale? No, you're very right कि scale काफ़ी बढ़ गया है. I mean, आज thematic funds भी 3-4,000 crore raise कर लेते हैं, and mainstream funds much more than that. So 2-3 things which have become important पिछले 5-6 साल में, I would say, around 5-6 years, because mutual fund has become an alternative to normal savings, normal fixed deposit. So 2 things according to me which I think all mutual funds are doing is that जो पहले होता था style bias कि कोई बहुत value investor है, कोई growth investor है, I think people have realized that that thing will not work. You have to have as little style bias in your investment style, because now आप 1,000 crore 2,000 crore फंड की बात नहीं कर रहे हैं. नाउ यू आर कम्पीटिंग विथ, यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम एब्सोल्यूट रिटेल इन्वेस्टर जिसको ये सब समझ में नहीं आता है कि भाई आपका वैल्यू बायस है तो आई कैन लिव विथ 5 years ऑफ अंडर परफॉर्मेंस. तो दैट आई थिंक इज अ बिग रियलाइजेशन which at least we are kind of already kind of using it in our own investment style. The other thing is that risk management becomes important, because इस scale पे you also, as he was saying, that we have to stay ahead of the market. तो थोड़े हमें contrarian bets, because हम लोग same conferences में जाते हैं, same चीज़ें सुनते हैं, तो आप कैसे उसमें अल्फा कैसे जनरेट करेंगे, तो उसमें थोड़ा तो हमें contrarian bet भी लेना पड़ता है कि how do you stay ahead and make that extra return, but at the same time manage the risk because of the other factor which I mentioned कि scale इतना बढ़ गया है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम केवल contrarian ही रहें और 3-4 years तक अंडर परफॉर्म करते रहें. तो हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा. वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, और जितना ये इंडस्ट्री ग्रो होगी वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जाएगा. तो कई बार इससे एक इंटरेस्टिंग सवाल ये पैदा होता है, जब इतना इन्फ्लोज आता है, एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, स्मॉल और मिड कैप में ये यूनिवर्स ही इतना बड़ा नहीं है और इतना सारा पैसा आ रहा है, तो कहाँ से मिलेंगे लोगों को ऑप्शंस? द इंटायर कैटेगरी विल ऑब्वियसली बी ओवरप्राइस्ड, and where will you get good opportunities in such an oversaturated market? That's to me, right? Yeah, that's to you. So मेरा थोड़ा contra view रहता है, means with small, mid cap, large cap. I have a slightly contra view, right? Because when we say कि small, mid cap छोटा space है, right? Actually, small, mid cap मेरे लिए space large cap से बड़ा है. Actually, large cap is a space of 100 stocks only. This is the definition, right? You're talking about market cap, right? कि market cap बड़े बड़े हैं, लेकिन and then the other part which you talk about is कि large cap is the most over-researched part of the market. It's the space where getting a edge on a theme is difficult. Whereas small and mid cap is वो समुंदर type है. मतलब 250 तो मिड कैप है, उसके बाद पता नहीं कितने स्मॉल कैप हैं, और वो साइज़ भी इंडिया की अब देखने जाए तो आई थिंक इस रिव्यू में 67,000 करोड़ पे तो आई थिंक मिड कैप खत्म हुआ है. सो 67,000 करोड़ पे अगर मिड कैप और स्मॉल कैप चालू हो रहा है 22-23 हज़ार करोड़ पे, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स सो द मार्केट ऑन द स्मॉल एंड मिड कैप टू मी इज अ बिगर मार्केट दैन इवन द लार्ज कैप साइड, बिकॉज द लार्ज कैप साइड इज द वेयर इवन योर FIIs आर प्लेइंग. So there's a lot of thing going around there. So I think this is a space which is going to be the, unless and until SEBI changes the criteria कि small, and I keep on using this anomaly कि अगर हम बोले कि इंडिया में 10 ही अमीर लोग रहेंगे, तो 10 ही अमीर रहेंगे तो बाकी लोग, मतलब तो बड़ा इंडस्ट्री क्या होगा? जो गरीबों की इंडस्ट्री है वो बड़ी होगी, अमीरों की छोटी हो जाएगी ना अगर 10 ही अमीर है तो. So unless and until SEBI changes from 100 to a market cap criteria, I think mid and small cap will offer more opportunities than the large cap space. That's my view actually. लेकिन बात ये कि कितनी अच्छी कंपनियां होती हैं उस स्पेस में लिक्विडिटी कितनी होती है, क्योंकि मार्केट कैप ओनरशिप वगैरह इतनी स्प्रेड नहीं होती है. और आपका कल को आप खरीदने जाते हैं कोई चीज़, इम्पैक्ट कॉस्ट वगैरह वगैरह ज़्यादा रहता है. बिल्कुल. और क्योंकि इतनी सारी कंपनियां हैं जो लिक्विड होता है लार्ज कैप में, तो इम्पैक्ट कॉस्ट वगैरह. So that's where small and mid cap is a space which is, my view has always been that this is a space where you have to think slightly, which he was also pointing out, you have to be slightly contrarian and think ahead of the curve and try to buy early, right?
And that's where you get the buying liquidity also, and you have to be early in selling also. That's where you get the selling liquidity also, because liquidity is one of the most important risk management criteria. Without that, it's a problematic space. So that's a key criteria there. But one change which happened कि पहले हम 5,000 करोड़ पे small cap बोलते थे, 22,000 करोड़ पे small cap है, काफी liquidity है मतलब. Okay, great. So, sorry. Yeah. 5,000 stocks listed, about 2,000 stocks, about 900 stocks with market cap of more than 2,000 crores. I classified sectors into high growth segments and normal growth segments. So high growth में आजकल suppose you are saying consumer retail finance, defense, EMS, electronic manufacturing, capital goods, construction, ये सब में जो high growth दिख रहा है, so वो मैंने हाई ग्रोथ सेगमेंट में क्लासीफाई किया. तो 950 कंपनीज अप्रॉक्सीमेटली है जो 2000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप है 5000 में से. 950 में से अगर हम नंबर ऑफ कंपनीज देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 450 कंपनीज हाई ग्रोथ सेगमेंट में आती हैं और 450 कंपनीज नॉर्मल ग्रोथ सेगमेंट में आती है. वो नंबर ऑफ कंपनीज हाफ एंड हाफ है. लेकिन अगर मार्केट कैप से हम डिवाइड करें तो only 30% of the companies are in the high growth segment in market cap and 70% are the large caps. Or, sorry, 30% of the market cap is in high growth, 70% is the normal market cap. But लेकिन वो 30% जो high growth market cap है, उसमें अगर distribution देखें तो 2/3 are in mid and small caps and 1/3 is in large caps. So we are talking about approximately 2/3 of 450 companies which are in this segment. तो number of stocks जैसे संतोष कह रहे हैं ना बहुत ज़्यादा है. तो मिहिर, एक चीज़ जब आपका इंट्रोडक्शन हो रहा था मैंने नोटिस किया, आपने इंश्योरेंस में भी काम किया है, आपने सॉवरेन वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में भी काम किया है, आपने पहले म्यूचुअल फंड्स में भी काम किया, वापस आपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली है. एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अभी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है, बढ़ती जा रही है लेकिन कॉम्पिटिटिव हो रही है, और बहुत ही ये जो ऑडियंस है ये बहुत डिमांडिंग बन गई है, और अभी प्रेशर बहुत आता है फंड मैनेजर्स के ऊपर, इनफैक्ट ऑन अ डेली बेसिस टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व. आपको हर एक किसी को क्वार्टाइल 1 में आना है. ये तो पॉसिबल है नहीं बाय द लॉ ऑफ एवरेजेस. तो आपको क्या लगता है, आप गलत जगह पे वापस आ गए कि वहाँ इंश्योरेंस में इतना कंपटीशन नहीं था, सॉवरेन वेल्थ में कुछ डेफिनेशन ही अलग होती थी उसमें? सेल्फ पनिशमेंट नहीं, देखिए मैंने तो करियर ही म्यूचुअल फंड से शुरू किया था. I started with SBI mutual fund for 6 years and then moved to various, started various other mutual funds also. लेकिन I think जो involvement और excitement जो mutual fund में रहती है, maybe I'm like that, maybe I flourish under pressure. और pressure का ये है ना, if you enjoy what you're doing then there is no pressure. एक तो है you should be enjoying, तो ये हम 29 साल से मैं कर रहा हूँ, I'm not still tired, so obviously I'm enjoying what I'm doing, so that's one. But more importantly, if you are clear about what you are doing, philosophy and process अगर आपकी और आपकी टीम में अगर clear हैं तो कोई प्रेशर नहीं है. और उसमें जो कंपनी की मैनेजमेंट और प्रोमोटर जो फंड हाउस है उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि हाउ वेल दे आर एबल टू सपोर्ट द इन्वेस्टमेंट्स टीम इन रनिंग द प्रोसेस एंड फिलोसफी इन विच दे ट्रूली बिलीव इन. और उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बिटवीन द फंड मैनेजमेंट टीम और फंड हाउस फिलोसफी में तो कोई प्रेशर नहीं है. और उसमें तो है ना, प्रेशर जब होता है आप जब लुकिंग लेफ्ट और ड्राइविंग राइट करते हो तो प्रेशर हो जाता है. पर अगर आप एक ही फिलोसफी को फॉलो कर रहे हो, एक क्वार्टर नहीं चलेगी, एक क्वार्टर चलेगी, बट लॉन्ग टर्म में चलती है. So that's where the maturity of the fund house and the experience of the fund house comes into play. Chirag, you're the CIO of your mutual fund. आप पे कितना प्रेशर आता है? सेल्स आपको ये बोलता है कि पहले आप अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करो फिर हम सेल्स लाएंगे. तो हाउ डू यू डील विद अ सिचुएशन लाइक दैट? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स भी डिमांड करते हैं. हमने देखा है कि ये मार्केट इंडिया में अभी भी इट इज़ ओवरवेलमिंगली परफॉर्मेंस ड्रिवन. I don't want to take the names of fund houses, but we've seen many of the fund houses
फ्लरिशिंग, एक की तो मैंने सुना सेल्स टीम 3 लोगों की है, and it's among the top equity fund houses in the country and of a very recent vintage in a new avatar. So this market is very, very, very investment performance oriented, और वो भी we are fixated on that 1 year. So how do you deal with it? Because you've been around for many years. Yeah. So I'll completely agree with what Mihir said, and I'll further that argument. Agar if you're staying the course and if you are generating long-term alpha, because when you're trying to change things significantly short-term में, तो ज़्यादा churning हो सकती है. You are not taking risk into account. You're taking excessive risk to get that return, and in the long run, that hurts significantly. वो जो short-term gain के लिए वो long-term pain जो आता है, it's kind of sometimes irreversible. So एक consistent performance deliver करने की try करते हैं, as opposed to be the top one. Top अपने आप आ जाएगा. If you're delivering consistently, you will be at the top in the long run. So that is what we try to do. और एक investors को एक predictable performance देने की try करते हैं. So at any point in time, they should know us so much कि आज market क्या कर रहा है, तो मेरा fund का performance किधर होगा. They should be knowing us that much. So that is our endeavor, as opposed to saying that आज मैं top quartile में नहीं हूँ, कल मैं top quartile में आऊँगा. उनको उतना भरोसा आना चाहिए कि आज नहीं है, मगर कल तो आने ही वाला है top quartile में. Because these are consistent guys, over a period of time, they will deliver. So that's always been our communication, that we are consistent in terms of what we do, and result is just an outcome. So rankings and rankings हमारे हिसाब से transitionary होती है. Process is what drives performance, and that is what we stick with. So Santosh, you've worked with the fund house, which has had its glorious moments in performance. So what do you have to say about this excessive pressure on being in the top quartile consistently? Yeah, so I mean, this is a daily exercise, right? And I would totally agree that, see, eventually it's about process, right? Daily performance तो आपके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, मतलब भगवान के ही हाथ में है, बाकी तो किसी के हाथ में है नहीं. So it's about process and following the process, right? Because if it, and the realization is कि once and what other realization is कि जब आपका out performance बहुत heavy रहता है, तो आप अपना process को भूल के सोचने लगते हो कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, right? वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला मेरे को हमेशा याद आता है कि अपुनिज भगवान है, वैसा आता है, right? So that's the time you stop thinking about the process and you start thinking about yourself, right? What I do is the right thing to do, and that's what causes the sort of change in the performance what you have. So belief is if you follow the process and if you are consistently doing what you are telling the investors, because my belief is first telling the investor is also important, that what I am going to do and what sort of performance you should expect from me. And this should lead to what it should. And if you are consistently doing that, then over a period of time, the long-term performances are going to follow. They are not. I mean, it's only when you stop thinking about your process and start thinking about an individual, that's when you start to fall. Okay. I'll now move to a question which is related to it and which is of great... Can I add to this point? Because ये सब हम लोग daily face करते तो ये इसमें काफ़ी emotional responses भी हो सकते हैं. तो इसमें जैसे I think बिली जीन किंग ने बोला था, जो टेनिस प्लेयर थे, कि pressure is a privilege. अगर आप 50 लाख करोड़ मैनेज कर रहे हैं एज एन इंडस्ट्री, तो आपको ये प्रेशर, यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट, यू हैव टू लिव विद इट एंड मैनेज इट. सो द वे टू मैनेज इट इज़ कि जैसे मैं खुद करता हूँ कि अगर मैं एकदम नंबर 1 हो जाता हूँ तो मुझे बहुत डर लगने लगता है, बिकॉज मुझे पता है कि उसके बाद फिर आई हैव टू बी रियली ऑन टॉप. सो द वे टू डू इट इज़ दैट इफ़ यू आर रियली परफॉर्मिंग रियली वेल, then you have to even more aggressively manage the risk in your portfolio, because आपने ऐसा कुछ किया है जो आपकी स्किल के ऊपर आपने कर दिया है, क्योंकि market gives you little bit of lucky breaks. So therefore you have to really remain really to the ground and humble. जैसे Santosh was also saying that you cannot believe, like Talib कि जो है fooled by randomness, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, उससे आपको दूर रहना है. सॉरी, आपका क्वेश्चन. हाँ, बस इट इज रिलेटेड टू दिस. आपने अच्छे से मेरा जो क्वेश्चन है उसके लिए ग्राउंड बना दिया कि जो अपनी फंड मैनेजमेंट टीम होती है उसको हम लोग कैसे अवॉर्ड करते हैं, रिवॉर्ड कैसे करते हैं, इंसेंटिव कैसे करते हैं. क्योंकि देखिए, अच्छा प्रोसेस रहा, अच्छी थिंकिंग रही, अच्छा स्टॉक सिलेक्शन रहा, अच्छी क्वालिटी रही, और आपका सब कुछ फॉलो किया, लेकिन कई बार मार्केट डजंट बैक अप योर परफॉर्मेंस. वी नो दैट. एंड जैसा आप उल्टा भी बोल रहे थे कि कई बार तुक्का लगता है, एंड देन वी से अपन जी भगवान है.
तो हाउ डू यू मैनेज a team in those circumstances? और जो अच्छा जिसका परफॉर्मेंस है वो डंकी की चोट बोलता है सब पैसा मेरे फंड में आ रहा है, मेरे को इस साल इतना बोनस चाहिए. So you have both the things where someone who's done well in terms of process, thinking, approach, strategy is not rewarded, and someone who's done well because certain stocks clicked, certain sectors clicked, certain changes took place in the environment, policy, whatever, which backed his stocks. तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आपकी टीम को कैसे रिवॉर्ड किया जाए? So only two things we do in appraisal, which I think is important from your this question point of view. One is that we give higher weightage to outperforming the benchmark. भले ही आप क्वार्टाइल 2 में हो या क्वार्टाइल 3 में, अगर आपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है तो आपको उसमें आपको ज़्यादा वेटेज मिलती है, क्योंकि अगर इफ़ यू कीप आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप बाय डिफ़ॉल्ट 1 और 2 में रहोगे ही. ये काफ़ी मतलब क्लियर है इसमें ओवर अ 3 to 5 year पीरियड. दैट इज़ नंबर वन, that we give higher weightage to outperforming the benchmark, and we give equal weightage to short term and long term. मतलब 1 year, 3 year, 5 year we give equal weightage, so that किसी का एक साल बहुत अच्छा चला गया या बहुत बुरा चला गया तो उसको excessive weightage हम नहीं देंगे. That is the only way to manage the behavior. These are the two things. ठीक है. अच्छा, एक इससे एक लिंक्ड एक इंटरेस्टिंग सवाल है. आप लोग सब फंड मैनेजर्स हैं और फंड मैनेजमेंट पे आजकल रिस्क कंट्रोल बहुत ज़्यादा लागू होता है. अभी तो बड़े बड़े फंड हाउसेस में तो पूरी फौज है रिस्क डिपार्टमेंट में. तो हाउ डू यू पीपल लुक एट रिस्क? डू यू लुक देम एज विथ एन एडवर्सरियल थिंग कि बिकॉज ऑफ देम हमारे ब्रेक्स हम नहीं मतलब लगाने पड़ते हैं, जान लगाने नहीं चाहिए. अगर हमें खुला छोड़ दिया जाए तो हम लोग परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा देंगे. क्योंकि मेरा खुद का एक तजुर्बा था. दिस वाज अबाउट 20 years बैक. आई हैड अ चांस टू वर्क विथ अ वेरी ग्लोबली फेमस फंड हाउस विच इज़ नॉट देयर इन इंडिया एनी मोर, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल. उनके जब मैंने ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे बताया तो मैंने देखा कि उनकी जितनी भी अप्रोच थी वो ये कि पैसा बने ना बने, पैसा खोना नहीं चाहिए. Ultimately, I'm putting it very crudely, obviously they were not putting it that way, but मैंने देखा और उनका फिर क्या होता था, फंड मैनेजमेंट बेंचमार्क हगिंग होती थी उसमें कि 1, 2, 3, 4 स्टॉक विच वर एविडेंटली पुअर क्वालिटी इन द उसको हटा दिया और बाकी आप उसी के साथ लगे रहे और वो लोग अपना मोटी फी कमा रहे हैं उसमें. तो how do you people feel as and you come from a very heavily equity oriented fund house, you know? So sir, belief is कि मैराथन रेस दौड़ रहे हैं, राइट? और उसमें जब हम स्प्रिंट भागने लगते हैं तो रिस्क वाला आदमी है जो बताता है कि भैया स्प्रिंट मत भागो नहीं तो अभी गिरोगे और उसके बाद उठना मतलब आगे भी दौड़ना है. So that way the belief is कि risk management or risk team is not an adversary actually. It is whatever they say, it has to be seen with full respect, because something you are doing wrong and that's why they are wrong, or I mean I would not use wrong, but something you are doing which is getting highlighted, whether it's the concentration risk which you are taking, or is it any other risk which you are doing, or you're churning more, or whatever you are doing, it's the risk team is highlighting to you that okay, something is going wrong. And in a marathon race you only win if you finish. So हमारे यहाँ पे क्या मोतीलाल जी एक कहावत बोलते रहते हैं हमेशा कि to finish first you have to first finish, right? So the belief is कि to finish the marathon you have to follow certain risk parameters, and if the risk team is highlighting that, they are helping you out and they are not your adversaries in any ways. Chirag, how do you look at it? Is it just a hygiene factor? Does it add value to your processes? What does it do? No, I think risk management is very important, but I think it has to be built in the framework rather than being as a rear view mirror, right? Rear view mirror is just for course correction, maybe you have deviated something, but the specifics have to be noted in the first instance when you build a framework. So we think that there are certain risk management things which are core to investment, which are not negotiable. For example, governance is non-negotiable. Liquidity is non-negotiable. Today you see many small cap funds that are operating in the country where, you know, they have not stuck to certain mandate sizing, I think, because if you see as the size of the funds have grown, number of stocks in the portfolio have grown.
I mean, what you bought as seeing a good 50, 60 stock portfolio has become 100, 150 stock portfolio. I mean, what you bought as historical track record may no longer be true today because the things have changed significantly. So within that, liquidity is also very paramount because if you look at that space, there is less liquidity as we discussed. Many stocks that are there in many portfolios will take 200, 300, 500, 1,000, 1,500 days to liquidate. Is that a good risk management? I don't think that's a good risk management. So you have to stick to what you have defined, and it doesn't mean that, if you're getting, there are investors coming in that space, means you kind of let it allow to grow and take compromises on anything. That's additional risk to the investors, be it liquidity, be it higher sizing of the portfolio from a market cap perspective. So all those things are very, very important, very, very crucial. I think it's our fiduciary duty as fund managers to stick to those hygiene factors, as you're calling it, which are very, very important. Otherwise, they bring a different risk to the table overall. Okay. Now, in all this conversation, the crowd here gets very confused. कि आप लोग बात कर रहे हैं, you're taking away from something that they understand very well, which is performance as reflected in numbers. When you talk about risk processes and things like that, they don't really understand it. So in the absence of numbers, how do MFDs evaluate the performance of a fund? How do MFDs evaluate the performance of a fund? अगर हम 1 year का नंबर नहीं देखते, आप टॉप क्वार्टाइल में भी नहीं है, then how do I decide कि यार ये टॉप क्वार्टाइल में नहीं है, ये तो थर्ड क्वार्टाइल में है, मैं इस फंड हाउस को एक चांस देता हूँ. So हर चीज में, even when we buy a stock for example, तो एक तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट होता है और एक होता है कि you like the story, you like the approach of the company, you like the strategy of the company, right? So if you ignore the numbers, then all you are left with is the fund houses or fund managers' philosophy, approach to investing, and that I think is the secret sauce which is going to run the fund, whether the numbers happen or not. Do you understand? First of all, has the fund house or fund manager articulated the strategy well enough? Have they demonstrated that they are implementing the strategy consistently over a period of time, and do they have the resources and the team quality to run that strategy, right? Is it an opportunistic philosophy or a long-term conviction philosophy? I think that's something that ultimately it boils down to. Because first of all, not all MFDs are same. Within all MFDs, not investors are the same. So somebody who wants a yield from the portfolio should not go for equities because he needs a regular income. They should probably go for fixed income. And within fixed income also, if it's a retiree, he should probably not go for a very high risk credit fund. He should probably go for a AAA fund. नहीं मिहिर, मैं investment selection की बात कर रहा हूँ, asset allocation की नहीं. हाँ, no, I'm saying सिर्फ इस बात की कि X fund versus Y fund. Correct. अपने को वो. So absolutely. So as long as your philosophy is clearly defined, for example, we say we are growth investors. So if we believe, and if the investor believes that India is a growth market, then probably he should go for a fund house which has a more aggressive growth philosophy. But if the person believes that downside protection is far more important than participating in the upside, then probably they want to go for a fund which is a little more dividend yielding and that kind of approach. So ultimately what matters is whether you like the story, whether you understand the story, and whether that philosophy is very well run and articulated. Okay. Now, अभी मैं एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद में we will make this discussion open to the house. Okay. So please keep your questions ready. Someone will come around with a mic. Please go around with a mic, and you can ask questions. When you ask questions, give your name and give the name of the person you want the question to be answered by. Okay. Finally, मैं आपको एक चीज़ ये बोलता हूँ जो कि बहुत कंफ्यूजिंग लगता है इस टाइम पे. अभी मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि तेजी बहुत है. We've seen the markets have been only in one upward direction. For many people, it's a new experience.
I've not seen the markets in an upward trajectory for so long in my entire life. इस period में तो typically in the 90s and the first decade, 2 cycles पूरे हो जाते थे, जो हमने अभी नहीं देखे हैं. So लोग बड़े confused है कि is this the time for lump sum? Is this the time for SIP? What should be done? Particularly if you're talking about, let's say, mid and small cap funds. So I'll start with you, Rahul. जो मार्केट में जो तेजी है जैसे आप बोल रहे हैं उसके 2-3 कारण. एक तो इकॉनमी भी अच्छा कर रही है, एंड इकॉनमी अच्छा कर रही है रिलेटिव टू अदर इकॉनमीज. तो उसके लिए उसकी वजह से हमें प्रीमियम मिल रहा है, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लव मिल रहा है, जो कि नॉर्मल कोर्स में अगर चाइना भी अच्छा कर रही होती तो हमारा ये मार्केट भी नहीं होता. बॉटम लाइन यही है. क्या ये चेंज होने वाला है 1 साल में 2 साल में? लगता तो नहीं है. तो क्या हमें बड़े करेक्शन की वेट करनी चाहिए? मैं तो बोलूँगा नहीं. कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट तो अभी भी हो सकती है, छोटे मोटे करेक्शन तो होते रहते हैं. तो आई थिंक जो लोग कर रहे हैं मुझे लगता है वो करते रहना चाहिए. ज़्यादा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप ये जो बिग पिक्चर है जो हो रहा है ना, इवॉल्व हो रही है इकॉनमी के लिए और इंडिया के लिए रिलेटिव टू चाइना अदर कंट्रीज़, वो आप मिस कर जाएंगे. तो हो सकता है आज हम 20 के मल्टीपल में, हो सकता है 22 भी हो जाए, हो सकता है 19 हो जाए थोड़ी देर. तो उससे मुझे नहीं लगता है कि इकॉनमी का कोर्स बहुत बदलेगा. वो काफ़ी अभी भी काफ़ी सॉलिड लग रहा है. ठीक है, तो लमसम पे भी चूज कर सकता है, SIP भी चूज कर सकता है. मैंने सोचा मैंने ये क्वेश्चन अवॉइड कर दिया था. लमसम अगर डालना है तो फिर हाइब्रिड बेटर है. एसेट एलोकेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज दैट इज ऑल आई विल से कि लमसम शुड बी इन BAF मल्टी एसेट काइंड ऑफ कैटेगरीज. Okay. Santosh, what about you? What would you recommend? So I totally agree कि मतलब टाइम चीज़ ये कि वी आर एट अ प्लेस जहाँ पे हम बात करते हैं कि वी आर वन स्टैंडर्ड बिटवीन वन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एवरेज, राइट. दिस इज वेयर वी आर ट्रेडिंग. एंड हमारा जो अगर देखें तो फंडामेंटल साइज में ग्रोथ भी इट्स ऑलमोस्ट लाइक वन स्टैंडर्ड डेविएशन अबव ओनली, बिकॉज 2014 to 20 was almost like nothing, no sort of growth rate in the corporate earnings, right. Our growth rates are also higher. Yeah. So when we are talking about the PE multiple, that is also to be seen in perspective कि growth rates are slightly higher, right. It's more than the one standard deviation where we are. So clearly growth rates हैं हमारे. Relative to the world, we are doing better, which is clearly there. So, एक price to earning multiple जो premium है वो तो रहेगा ही. Now यहाँ से premium बढ़ेगा क्या? वो that is anybody's, that's God's grace, right? Means बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, I don't know. Means but what we could get is the EPS growth over next 3-4 years, which is again in more than teens, right? The EPS growth. Now वो इस साल आएगा कि अगले साल आएगा वो तो किसी को नहीं मालूम है. सो अगर वो नहीं मालूम है, जो चीज़ नहीं मालूम है उसके लिए उस पर दिमाग लगाना मेरे बस का नहीं होता है. जो चीज़ नहीं मालूम है तो फिर लेट इट बी एंड डू व्हाट इज़ इन योर हैंड. दैट इज यू आर गेटिंग द EPS ग्रोथ, यू आर गेटिंग द वैल्यूएशन विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, राइट. एंड सो अ पर्सन शुड कीप डूइंग व्हाट ही इज गुड एट, दैट इज कीप अलोकेटिंग, राइट. Okay, Chirag, what's your response? Sure. So अगर आप index देखें तो index looks slightly expensive from a valuation standpoint. But having said that, index के अलावा काफ़ी सारी pockets of opportunities है that are looking very very attractive. So I think rather than just going blindly into say investing in equity market through an index route, I think active management can play a bigger role, and that is what we have seen over last 1 year also. If you look at the SPIVA scorecard, लास्ट 1 साल के पहले का देखते हैं तो 90% ऑफ द एक्टिव मैनेजर्स वर अंडर परफॉर्मिंग. टुडे दैट हैज कम डाउन टू 60%, लेस देन 60%. सो दैट टेल्स यू दैट एज द ब्रॉड बेस्ड रैली इज टेकिंग प्लेस, मोर सेक्टर्स आर पार्टिसिपेटिंग, के एक एक्टिव मैनेजमेंट में आउट परफॉर्मेंस का स्कोप ज़्यादा हो रहा है. सो आई थिंक यू शुड गो इन टू फंड मैनेजर्स दैट आर सिलेक्टिंग दैट राइटली फॉर यू, और एक्टिव मैनेजमेंट इज अ बेटर प्लेस टू बी. ओके, सो नाउ वी ओपन द सेशन टू द हाउस. इनको जरा एक माइक दीजिएगा. हाँ, कपाड़िया जी बताइए. पंकज, 1 मिनट, उनको पंकज के हाथ में माइक पहुंच गया है. थैंक यू. या मेरा एक क्वेश्चन एकदम सिंपल लैंग्वेज में है. जो साहेब कहे वो सच्चा या सच्चा कहे वो साहेब, आप मुझे आंसर दीजिए. किससे ये जवाब चाहिए? कोई भी ले लो, कोई बात नहीं. इनमें से कोई भी जवाब. क्योंकि हमें इंडेक्स कुछ अलग बता रहा है, फिलोसॉफी इन्वेस्टमेंट की कुछ अलग हम सुन रहे हैं. सो हम किसको साहेब समझे? फंड मैनेजर को साहेब समझे, इंडेक्स को समझे, या सेंटिमेंट्स को समझे? So how many masters do you have?
मिहिर, देखिए, भगवान तो मार्केट ही है, और जो समझता है कि अपुनिज भगवान है उसको मार्केट लेसन सिखा देता है अल्टीमेटली. सो हम तो हम तो मार्केट को फॉलो करते हैं और होप करें कि लॉन्ग टर्म में मार्केट से थोड़ा बेटर रिटर्न्स दें, अल्फा क्रिएट करें, ताकि मैनेजमेंट फीस और हमारी सैलरी जस्टिफाई हो सके. राइट, दैट्स द होल पॉइंट. अदरवाइज एक्टिव मैनेजमेंट का क्या पॉइंट है? बट अल्टीमेटली नोबडी कैन गो अगेंस्ट द मार्केट. अगर मार्केट ऊपर है तो हम पॉजिटिव रिटर्न्स देंगे, मार्केट नीचे है तो हम शायद मार्केट से थोड़े कम नेगेटिव रिटर्न्स देंगे. बट ऑब्वियसली इट्स ऑल रिलेटेड टू द मार्केट. अल्टीमेटली तो मार्केट भगवान है. बट इसमें यह है कि as long as a fund manager I am completely focused in identifying the opportunities in the market, be aware of the changing trends and not letting any big picture thing go wrong. I think that's where I would say I have added value as a fund manager. Pramod Puranik from Nasik. Common question to all fund managers: whether this fund should be process driven or fund manager driven? मेरे ख्याल से इन लोगों ने काफ़ी पेन से ये क्वेश्चन आंसर किया है. इन्होंने कहा प्रोसेस ओरिएंटेड, इन्होंने कहा प्रोसेस ओरिएंटेड, आपने कहा प्रोसेस ओरिएंटेड, आपने भी कहा प्रोसेस ओरिएंटेड. तो मेरे ख्याल से द कंसेंसस इज दैट इट शुड बी प्रोसेस ड्रिवन. वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन वील. सर हाय सर, माय नेम मोहम्मद जिया फ्रॉम नांदेड़. सर चिराग सर से मेरा क्वेश्चन है, जैसा अभी मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में जो बात हुई है अभी कि अभी बहुत सारा स्पेस बचा है, तो सर एवरेज जो है ना, जो फंड ने जो परफॉर्मेंस किया है अब लास्ट 1 ईयर का CAGR वो 60% 70% तक गया सर. तो अभी इस लेवल पे क्या करना, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिर अभी कुछ उसमें वेट करके लमसम या फिर STP वगैरह करना चाहिए? तो अभी तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करने का चांस है सर उसमें. श्योर. स्मॉल कैप एक जो अपॉर्चुनिटी सेट है वो बहुत बड़ी है. वहाँ पे जो हम ट्रैक्शन देख रहे हैं छोटी कंपनीज़ के लिए, गिवन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं. अर्निंग्स काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है, ऑर्डर बुक्स आ रहे हैं. सो काफ़ी एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा छोटी कंपनी को मिल रहा है. सो आई थिंक वो एलोकेशन आपका बहुत स्क्यू ना हो गया हो तो उसे बनाए रखिए. अगर लगता है कि बहुत स्क्यू हो गया, आपने लगा कि 20% मेरा स्मॉल कैप में होना चाहिए, 20 से आज 30% 35% हो गया है, तो थोड़े प्रॉफिट ले लेने चाहिए. बट अगर आपका एलोकेशन उतना नहीं है और आपको और बढ़ाना है तो बने रहिए इन्वेस्टमेंट के साथ. So we come to a conclusion. So give a big round of applause to all our panelists.